Now, students, question number 52. It's of October, November 13, paper 1-1. The first part is in an arithmetic progression. पहले से ही आपको बता दिया गया प्रोग्रेशन अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक के तमाम फॉर्मूला इस पर अप्लाई किए जाएंगे. In an arithmetic progression, the sum of the first 10 term is 400. So now S10 is 400, and the sum of the next 10 terms, sum of the next 10 terms. So can I say that S20 minus S10 equals to 1000? Can I say this? Next 10 terms क्या होंगी? यही होंगी ना. पहली 10 टर्म का सम क्या दिया गया? 400. और नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम अगर मैं S20 तक कैलकुलेट कर लूं, S20 तक कैलकुलेट कर लूं, माइनस कर दूं इसमें से S10, तो क्या आ जाएगा? 1000. Are you clear about this? Yes, but are you clear about this? Now, find the common difference in the first term. We have to calculate A and D. We have to calculate A and D. चलते हैं जनाब, वर्किंग स्टार्ट करते हैं. S20 equals to 1000 plus S10. And what is S10? 400. तो पता ये चला जो नेक्स्ट 20, जो कंप्लीट 20 टर्म्स का सम कितना आ गया? 1400. और पहली 10 टर्म का सम 400, और पहली 20 टर्म्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1400. एनी कंफ्यूजन? ना. अब आइए सम का फॉर्मूला n/2, 2a plus n-1. Common difference is d, which we have to calculate, equals to 400. Now 2 5s are 10, and 400 divided by 5 will be 2a plus 9d equals to 400 divided by 5 will be 70. This is equation. This is equation 1, right? Yes. Where this one? Sum formula n/2, 2a plus n-1 into d. Here it is. This is not 70, it is 80. Now, after that, second one, S20. S20 is n/2, 2a plus n-1, and the common difference is d, equals to 1400, right? So here it is, 2 10s are 20. So 2a plus 19d equals to 1400 divided by 10 is 140. Equation 2. दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं. मैं सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूं बच्चों. 2a plus 19d equals to 140, and I am subtracting the both equations. Subtract करने का मतलब क्या है? नीचे इक्वेशन के साइन चेंज. 2a cancel out. This will be minus 10d equals to 140 minus 80 will be minus 60. And what is the value of d? The value of d is 6, and we have to calculate the value of a. So 2a plus 19 into 6 equals to 140. A is equals to 140 minus 19 into 6 divided by 2. What is the answer of a? What is the result of a? The result is 13. So the value of a is 13, and the value of common difference is 6. Are you clear? That's great. Now, what we have in the B part? In the B part, what they are saying, the B part is a geometric progression has first term A, common ratio R, sum to infinity is 6. Sum to infinity is 6, right? Another geometric progression has first term 2a, common ratio R squared, and sum to infinity for this is 7. Find the values of A and R. A simple question.
Here, sum to infinity is 6. So can I say that it will be a over 1 minus r equal to 6? Yes. Simple, by the help of formula of sum up to infinity. And for this, can I say that a is 2a over 1 minus r squared equals to 7? By the help of sum up to infinity formula, r is r squared, a is 2a. यहाँ तक कोई confusion नहीं. Now, what is the value of a here? The value of a is 6 times 1 minus r. What is the value of a here? The value of a is 7 times 1 minus r squared divided by 2. Any confusion? दोनों एस को इक्वेट किया जा सकता है या कह सकते हैं कि इस ए की वैल्यू को फर्स्ट ए की वैल्यू पर रख दीजिए. सो इट विल बी 7 over 2 1 minus r squared equals to 6 times 1 minus r. So now 2 cross multiplied, 7 in the bracket, 7 1 are 7, 7r squared equal to 2 6 are 12, multiply by 1 is 12, 2 6 are 12, multiply by r is minus 12r. So now 7r squared, 7r squared minus 12r, and 12 minus 7 will be 5. What are the two values of r? Yes. What are the two values of r? 1 and 5 upon 7, and according to this we are able to calculate the values of a. If r is 1, then the value of a is 0, and if r is 5 upon 7, then what is the value of a? 12 upon 7. 12 upon 7. These are the values of a and b according to the given conditions. And here we have to reject this as a is 0. If a is 0, in arithmetic progression, a0 is possible. But in geometric progression, a0 is not possible. At that time, r tends to infinity, right? So reject these and accept these values, the second one. Question number 53 is from October November 13, paper 1-2. In the first part, an athlete runs the first mile of marathon in 5 minutes. His speed reduces in such a way that each mile takes 12 seconds, longer than the previous, right? Given that nth mile takes 9 minutes, find n. अब देखिएगा, an athlete runs the first mile, पहला mile 5 minutes में. क्या मतलब? कितने 5 minutes, कितने seconds? 300. Can I say that 300 seconds में से first mile complete किया? Clear? Right? Next कितनी देर में complete करेगा? 312. Next कितनी देर में? 324. हमने seconds में क्यों convert कर दिया? ताकि easily हम इसको difference वगैरह लिख सकें. Minutes में confusion रहती, decimal में आ जाती चीज. बाकी इंटरनेट की. Now, last is 9 minutes. And 9 minutes, how many seconds? 540 seconds. Right? ये हमारे पास complete arithmetic progression बन गई with a value of a 300. Common differences. Second minus first, 12. Right? We have to calculate, given that nth mile, find the value of n. We have to calculate n, and the value of Tn is 540. And what is Tn? Tn is the last term. So it's an arithmetic progression. It's an arithmetic progression. We have to use the formula of arithmetic progression, right? That will be a plus n minus 1 into d equals to 540. And what is a? 300 plus n minus 1, and the common difference is 12, equals to 540. So what is the value of n? What is the value of n? 540 minus 300.
divided by 12, 20 plus 1, 21. The value of n is, ये प्लस 1 करना भूल जाते हैं अमूमन, प्लस 1 then n is 21. तो 21 टर्म्स आ गई इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ इन द बी पार्ट, assuming that the length of the marathon is 26 miles, find the total time in hours and minutes to complete the marathon. 26 miles की मैराथन है. Find the total time in hours and minutes to complete the marathon. कितने टाइम में ये मैराथन कंप्लीट की जाएगी? ठीक हो गया था? Okay, students, here now we have to calculate the total time of 26 miles. Now, अब ये जो 26 miles लिखा हुआ है, ये हमें अब किस तरीके से वर्किंग की जाएगी इस पर? Now, the complete marathon is of 26 miles. हमसे ये टाइम के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बना चुके. अगर इस तमाम टाइम को सम कर दिया जाए, इस तमाम टाइम को सम कर दिया जाए, तो टोटल टाइम, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द मैराथन आ जाएगा. तो सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, एस एन. एन कितना है जनाब? 21 इक्वल्स टू n by 2 2a. what is a is 300 plus n minus 1, 21 minus 1, and the common difference is 12. So according to this, what is S21? What is S21? Calculate. Here is, students, in the second part, we don't have to calculate the sum. In the second part, we don't have to calculate the sum because in the first part, given that nth mile takes 9 minutes, find the value of n. 9 minutes जिस माइल पर लगे, हमने वहां तक का n कैलकुलेट किया प्रीवियस पार्ट में. तो अब ये क्या कह रहे हैं? अब जनाब इन्होंने कहा, assuming that the length of the marathon is 26 mile, find the total time in hours and minutes to complete the marathon. To complete the marathon. Yes. तो अब क्या किया जाएगा जनाब? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा? एस सम का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया अगेन, एस एन इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. नाउ अब हमें कहां तक जाना है? 26 माइल्स तक जाना है. कहां तक जाना है? 26 माइल तक जाना है. तो S26 will be 26 divided by 2, 2a. A is 300 plus 26 minus 1, and the common difference is, what is the answer? S26 का आंसर बताइएगा. 11 बताइए. 8 Okay, students, now here the result is 11700 seconds. 11700 seconds. अब इन seconds को हम convert करेंगे minutes में. 11700 divided by 60 कितना हो गया जनाब? 19.5. कितना हो गया? 19.5 minutes. अब सुनिएगा, 195 minutes. ठीक है, 195 minutes. अब आइए 195 minutes को कन्वर्ट किया जाएगा आवर्स में. किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? आवर्स में. तो डिवाइडेड बाय अगेन 60 कितना हो गया? 3.25 आवर्स. और ये कितना हो गया? 3 आवर्स. अब 0.25 को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 तो कितना आ गया? 15 minutes. This is the final result. Are you clear? Now,
Yes. Now, B part. What we have in the B part? A second and the third geometric progression. A second and the third term of geometric progression. T2 आपको दी गई. T2 is 48. And the third, T3 is 32. Find a sum to infinity. Find a sum to infinity. सबसे पहले तो मैं कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं. किसके इक्वल है? T3 डिवाइडेड बाय T2. हमेशा आपको मालूम है कॉमन रेशियो कैसे आता है. आपको मालूम है कॉमन रेशियो कैसे आता है. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म. तो रिजल्ट आया 1.5, 3/2. द कॉमन रेशियो इज 2/3. द कॉमन रेशियो इज 2/3. ठीक हो गया. नाउ अब आइए सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं. T2 इज इक्वल टू 48 को क्या मैं लिख सकता हूं? AR इक्वल टू 48. द सेकेंड टर्म इज 48. इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो क्या लिखा जा सकता है? AR इक्वल टू 48. नाउ कॉमन रेशियो हमारे पास मौजूद है 2/3 का इक्वल टू 48. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? What is the value of A? The value of A is 72. Any confusion? A आ गया, R आ गया, तो sum up to infinity A over 1 minus R, and R is 2/3. What is the answer? 216 is the final sum to infinity. In question number 54, first part is in a geometric progression. फिर पहले ही आपको बता दिया गया the progression is geometric. The progression is geometric. The sum to infinity is equal to sum to infinity is equal to 8 times the first term. Sum to infinity is equal to 8 times the first term. Find the common ratio. We have to calculate the common ratio. What is sum to infinity? A over 1 minus R equals to 8A. A and A cancel out. 1 minus R equals to 8. 1 minus R equals to 1/8. Cross multiplication. And R equals to 1 minus 1/8. And the value of R is 7/8. This is the common ratio of the given geometric progression. Are you clear? Next, in the B part. Yes, any confusion? Sum up to infinity is 8 times first term. What is sum up to infinity? A over 1 minus R equals to 8A. A and A cancel out. Cross multiplication. 1 minus R here, 8 here. So 1 minus R equals to 1/8. By this, the value of R is 7/8. Clear? Next one, in the B part. In an arithmetic progression, the fifth term, T5, is 197, and the sum of the first 10 terms, S10, is 2040. Find the common difference. Suniyega baap. What is the fifth term of arithmetic progression? A plus n minus 1, 5 minus 1 is 4D. Clear? 197, S10, n by 2, 2A plus n minus 1, common difference is D, equals to 2040. Now, here it is, 2 5s are 10. 2040 divided by 5. 408. According to the first equation, the value of A is 197 minus 4D. Here it is 2. 197 minus 4D plus
90 equals to 408. 2 multiplied by 197 will be 394 minus 4 twos are 8D plus 9D equals to 408. 90 minus 8D is D. 408 minus 394, 14. And now, what is the value of A? 197 minus 4 times 14. What is A? 141. But we just have to calculate the common difference. हमें सिर्फ the sum, yes, find the common difference. We just have to calculate the common difference. Now, question number 57 is from May June 12th, paper 1-1. What we have in the first part, the first two term of arithmetic progression are, पहली टर्म क्या दी गई 1, दूसरी टर्म क्या दी गई cos square of x. Show that the sum of the first 10 terms can be expressed in this. Sum of the first 10 terms calculate करना है हमें. Sum का formula S10 equals to n by 2. 2a. What is a? What is a? 1 plus n minus 1. 10 minus 1. And what is common difference? Second term minus first term. Cos square x minus 1. यहाँ तक कोई confusion? No. This will be 5. In the bracket we have 2 plus 9 cos square x minus 1. We have identity of sin square x plus cos square x equals to 1. So sin square x equals to 1 minus cos square x. But here we have cos square x minus 1. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स. आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? Now 5 2s are 10, 5 9s are 45, माइनस में 45 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स. ये S10 आ गया. The value of A is 10. The value of B is 45. Are you clear? Any confusion? No. Clear? Yes, but are you clear? Now, in the B part, the first two term of geometric progression, 1 and 1 upon 3 tan square theta. पहली दो term geometric progression की. Find the set values of theta for which the progression is convergent. थीटा की वो वैल्यूज निकालनी है जिसमें प्रोग्रेशन क्या हो? कन्वर्जेंट हो. सुनिएगा, आपको जब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रोग्रेशंस के बारे में बताया जा रहा था तो उसमें बताया था कि R must be in between -1 and 1. R कॉमन रेशियो होना चाहिए -1 से 1 के दरमियान. तो प्रोग्रेशन क्या होती है? कन्वर्जेंट. तो प्रोग्रेशन क्या होती है? कन्वर्जेंट. और बियॉन्ड दीज वैल्यूज डाइवर्जेंट. ठीक हो गया? अब आइए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जरा वर्किंग स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इज R? 1/3 tan square theta divided by 1 second term divided by first term. Second term divided by first term. So can I say that tan square theta divided by 3 is the value of R? यहां तक कोई प्रॉब्लम? Any confusion up to this? No. अब आ जाइए. अब आ जाइए जनाब. We have to calculate the value of theta from 0 to pi by 2. We have to calculate the value of theta from 0 to pi by 2. Yes, रेडियंस में चलेंगे अब हम. अब आइए जनाब, किस तरीके से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी जरा चेक करते हैं. अगर मैं पूरी इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो इट विल बी -3 tan square theta and here it is 3. Any confusion? Any confusion? No. मुझे तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मुझे तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है.
अब थीटा की वैल्यू किस तरीके से आएगी, मैं इस इनइक्वालिटी को ब्रेक करके भी लिख सकता हूं। कैसे? एक तो क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन -3, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इज लेस देन 3। एक लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन -3, और एक लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा इज लेस देन 3। नेगेटिव का तो अंडर रूट पॉसिबल होता नहीं, तो ये तो कर दिया हमने रिजेक्ट। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। यहां पर पॉसिबल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, tan थीटा इज लेस देन √3। सिर्फ पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहना है, 0 से लेकर π/2 तक, और पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? tan इनवर्स ऑफ √3, 1/3π। तो पता ये चला थीटा की वैल्यूज क्या आ गई, लेस देन 1/3π हमें रहना है। दीज आर कॉल्ड सेट वैल्यूज। लेस देन 1/3π कितनी ही वैल्यूज है। क्या बेटा? नहीं, अंडर रूट बेटा, अंडर रूट। tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो इस वजह से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्लियर? After that, second one, find the exact value of the sum to infinity when theta is this. Second part. क्या कहा गया? सम टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है सम टू इन्फिनिटी का? a/1 - r, एंड व्हाट इज a? 1/1 - r। r क्या है? tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? π/6। और आंसर बताइए, व्हाट इज द रिजल्ट? What is the answer? Calculator in radians. 1.1238 is the result. Are you clear? Sum up to infinity हमने कैलकुलेट कर लिया. When the value of theta is π/6. Yes, here the final answer is 9/8. The final answer is 9/8. Question number 59. This is of May June 12, paper 1-2. Formula of sum is given. Formula of sum is given. इसमें अगर 1 रखा जाएगा इस फॉर्मूला में n की जगह पर, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तक का सम आ जाएगा। 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 9। यस, स्टॉप वर्किंग, लुक एट द बोर्ड। आवाज सबकी तरफ से आनी चाहिए जब पूछा जाए। 2 रखा जाएगा तो सम क्या आएगा? द सम इज 20। क्या कहा गया? इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब बता दिया गया है इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड द थर्ड टर्म। प्रोग्रेशन का मालूम ना हो तो कैलकुलेट करने के लिए 3 टर्म्स निकालना पड़ती हैं। अभी तो इन्होंने बता दिया, तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द थर्ड टर्म, राइट? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म इज 9। द फर्स्ट टर्म इज 9। अब सुनिएगा, दिस इज द सम ऑफ 2 terms. This is not the second term. This is not the second term. तो क्या यहां पर लिखा जा सकता है? a तो चले हो गया 9, s2 इक्वल्स टू 20, और s2 किसके इक्वल है? t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 20। एंड व्हाट इज t2? 20 minus 9, 11। सेकेंड टर्म हो गई 11, तो therefore the common difference will be 11 minus 9 is 2। तो ये कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपने कैलकुलेट कर ली। आर यू क्लियर? एनी कंफ्यूजन एनीवन? नो। सेकंड, इन द बी पार्ट, in a geometric progression the second term is 9. Second term is 9 less than the first term. How to write the equation? क्या लिखें? t2 is equals to a minus 9। क्या कहा गया? इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सेकेंड टर्म
T2 is 9 less than the first term. फर्स्ट टर्म में से 9 लेस कर दो तो क्या आ जाएगा जनाब? हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी. फर्स्ट टर्म में से 9 लेस कर दो तो क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म आ जाएगी. आगे द सम ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म T2 प्लस T3 इक्वल टू 30. इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन दे दिया गया. सो नाउ अब हमें फिर वही चेक करने की नीड नहीं है. वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस. T2 का फॉर्मूला क्या है जनाब? AR इक्वल टू A माइनस 9. अगर हम AR को राइट साइड पे ले जाएं, 9 को ले आए तो A माइनस AR equals to 9. A common, so it will be 1 minus R equals to 9. Given that all the terms are positive, find the first term. We just have to calculate the value of A. अब T2 यहां पर क्या लिखा जा सकता है? AR. T3 क्या है? AR square equals to 30. AR common, 1 minus R equals to 30. What is the value of A? 9 over 1 minus R. यहां रखते हैं जरा A की जगह पर 9 over 1 minus R. साथ में R लिखा हुआ है. 1 minus R equals to 30. 1 minus R cancel out. R equals to 30 divided by 9. AR को कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 आ गया. Here it is. Yes. This is plus R. This is plus R. Wait, this is plus R. So now, अब आप देखिए जरा, जब A की जगह पर वैल्यू रखी जाएगी 9R over 1 minus R. Here it is 1 plus R equals to 30. अब आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए 9R को ब्रैकेट में, तो क्या हो गया? 9R into R is 9R square equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30 minus 30R. So now 9R square 9R plus 30R कितना हो गया? 39R minus 30 equals to 0. What are the two values of R? What are the two values of R? 2 upon 3 and minus 5. रिजेक्ट कर दिया गया इसको because all the terms are positive. Because all the terms are positive. Yes. Now we have to calculate the value of first term. R is 2 over 3. इसमें रखते हैं जरा. So the value of A is 9 over 1 minus 2 over 3. And what is the answer? 27. The answer is 27. Are you clear? Now, question number 61. It is from May, June 12, paper 1-3. The first term of AP is 12, A is 12, and the sum of the first 9 term, S9 is 135. Find the common difference. So S9 is 9 by 2, 2A plus N minus 1, and the common difference is D equals to 135. So now 135 multiplied by 2 divided by 9. What is this? 30. So what is the value of D? 3 upon 4. The value of common difference is 3 over 4. Clear? Now, in the second part, what is the description of second part? The first term, ninth term, nth term of AP are the first term, second term, and third term of GP. Find the common ratio and the value of n. सुनिएगा क्या कहा गया? कह रहे हैं अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म, नाइन्थ टर्म और nth टर्म, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो टर्म कौन सी होंगी? फर्स्ट, नाइन्थ एंड nth. और यही अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए तो टर्म्स कौन सी होंगी? T1, T2
और T3, ऐसा ही। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल हमें मालूम है, एंड व्हाट इज दैट रूल? क्या मैं लिख सकता हूं T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T2? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ज्योमेट्रिक सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो। वी आर वर्किंग ऑन कॉमन रेशियो, राइट? हाँ, सारे रेशियो सेम होते हैं ना, ऑल द रेशियोज आर सेम। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, मस्ट बी इक्वल टू फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड, ऑल द रेशियोज आर सेम। क्लियर? अब सुनिएगा, यस यार, जो सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है? T9। फर्स्ट टर्म सेम है, थर्ड टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है? Tn। और सेकंड टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है? T9। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। अब आइए आगे, T9 को हम लिख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a प्लस 8d, और T1 को क्या लिख सकते हैं हम? a। Tn को क्या लिख सकते हैं? a+n-1 इंटू डी, और T9 को हम क्या लिख सकते हैं? a+8d। अरे ये बात समझ में यहां तक कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट टर्म क्या है? 12। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3/4, क्योंकि कहा गया था सेम प्रोग्रेशन की बात हो रही है, सेम प्रोग्रेशन की बात हो रही है। तो फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 3/4, एक ही जगह अगर 12 रखा जाए प्लस 8 टाइम्स 3/4 डिवाइडेड बाय, एक ही जगह पर अगर 12 रखा जाए, here it is, a is again 12 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस की जगह पर 3/4 डिवाइडेड बाय a is 12, 8 टाइम्स 3/4। अब जरा मुझे ये सॉल्व, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 6 प्लस 12 is 18 डिवाइडेड बाय 12 equals to 12 plus n-1 into 3/4 divided by 18. So now, what? 6 2s are 12 and 6 3s are 18, 2 9s are 18, 9 3s are 27, 9 3s are 27 equals to 12 plus n-1 into 3/4. 27 minus 12 is 15 equals to n-1 into 3/4. 3 5s are 15 and 5 4s are 20 plus 1, n is 21। n 21 है जिस प्रोग्रेशन की ये कंडीशंस हैं। आर यू क्लियर? क्वेश्चन नंबर 61। Yes, guys. N कितना आ गया हमारे पास? 21. And we also have to find the common ratio of the progression. We also have to find the common ratio of the progression. Common ratio तो किसके इक्वल है? T2 डिवाइडेड बाय T1, और T2 है किसके इक्वल? T9 डिवाइडेड बाय T1। And what is T9? A plus 8D divided by A. And what is A? 12 प्लस 8 टाइम्स d कितना है? 3/4 डिवाइडेड बाय 12। तो 4 2s are 8, 2 3s are 6, 18 divided by 12, and the common ratio will be 3/2. Are you clear?